Okay, we have a question, Amas Faisal. Alright, so basically the financial aid process of AKU is pretty simple. First of all, well, the best person who can guide you regarding financial aid is AKU's financial aid office itself. Okay, so basically what AKU's financial aid office will do is they'll guide you through the process themselves. Just one second. They'll guide you through the process themselves. I myself, when I tried to get the financial aid from AKU, what I did was I just went directly to their office, and they were quite cooperative people, and they give me that. I think the person was named Irfan. He was quite cooperative. He told me that the financial aid, it actually depends upon the financial background. Okay, there's a slight echo. Okay, I'll try figuring that out. Actually, this is my very first live session, so please, if it's not of a very high quality, so please try to adjust. Okay, now I was saying that the financial aid process, all you need to do is just go to their financial aid department and take the required documents. Okay, that's it. That's the basic answer to that. The financial aid is of two types. Okay, it can be a loan or it can be a grant. I'll just go on to this section. Okay, it's not written anywhere. This email over here, mbbs.query@aku.edu, can be used to get financial aid from AKU. Information about the financial aid, not the financial aid actually. Okay, the financial aid department is out there, AKU's financial aid department, and they'll actually help you out with the process. Okay, it is of two types. It can be a grant or a loan, but it actually depends upon the financial status of the student and the place where he belongs. Okay, so you can either get a grant or an aid depending upon your financial status, and you have to return it in around 7 years after you graduate. Okay, this is what the latest information that I got. But again, the best way of finding out stuff is just directly emailing them at this email, mbbs.query@aku.edu. This is what I used to do. Okay, any question I had regarding AKU, I would just drop them an email over here, and I usually would receive a reply a day after. Okay, one day later. Now let me check out the chat box. Amaz, can you confirm if you received your answer? Basically, I don't have a full answer to what you are asking. Okay, you'll need to confirm that from the financial aid department. They'll be asking you, they can ask every person different documents. Okay, they can ask documents regarding your properties, meaning family property, and documents regarding what type of car you use, etc., etc. Okay, now, okay, great. But a financial aid office, but anyways, you don't need to worry about the financial aid right now. Once you get into AKU, everything is smooth. Okay, I mean, once you clear the test and you clear the interview, then the process is smooth. AKU itself will guide you in detail. Okay, by I am repeating NMDCAT and preparing according to PMC syllabus. Will I have to follow the AKU syllabus at this stage, or either prepare in the last 2 months after preparing the NMDCAT syllabus? Please guide. Tasawwur Abbas, basically this question is a very frequently asked question. So basically there is a simple answer to that, and the answer is, if you are preparing for AKU, okay, I'm repeating, if you are preparing for AKU, then you have to follow AKU's guidelines given on their website. Okay, basically the page that I've opened over here, let me just go to that. This one, oh no wait, this one right over here. The link to this this link has been given in my group which I created. By the way, this is the AKU's entrance exam prep group that I created, a Facebook group. I'll try posting this link in the comment section so that if anyone wants to join in. Just one second, let me just post this first. Okay, so the Facebook group has been posted in the comment section. Now
In this group, I made a post recently, somewhere down here. Okay, this one. This post is very important. Okay, I've given the link over here. You can click this link. Okay, you could go directly to MBBS of AKU's website, and यहाँ पर you can get the syllabus, the curriculum. Okay, and this curriculum, Chem Biophysics, you need to follow this if you want to get into AKU, or if you are preparing for AKU. This is preferred, but again, if you are preparing for the NMD CAD and you are preparing it from the Punjab board or the federal board, then of course you can use, you'll automatically get prepared for AKU as well, because the Punjab board, if you're following the entire book, then of course you'll definitely end up completing this syllabus. Okay, the 3 subject syllabus, because the syllabus that they have given us over here is quite less than the total book. Okay, it's not the entire book. A few chapters have been omitted. Okay, I've just opened this up. I hope you guys can see it clearly. Okay, over here, these are some topics and subtopics. The best way of preparing, as I've mentioned in one of my videos, is that you just read through the first line. Okay, for example, this one is, okay, the first chapter is quite basic. Now let's move on to the second chapter. Now if you, introduction to biochemistry, for instance, define biochemistry and biological molecules. Now this is their first learning objective, and you'll need to open up the Punjab board book, okay, and cover this from there. And then after you are done with this first pointer, then you come back and then you read the second pointer and cover that. In doing so, if you cover the entire syllabus, then your preparation is gonna be perfect. Okay, well, if not perfect, it will be very good. Okay, because of course you do need a lot of practice material other than covering the syllabus. Okay, covering the syllabus is just one aspect of the test. Doing practice questions, past paper questions if you can get from anywhere, and other practice material which I uploaded last year, basically the past papers of AKU and other practice material. You can just go on to that and practice from there. Okay, plus I'm gonna just give, okay, we've got a few more questions. I've heard that extracurricular activities matter a lot. For example, okay, what will distinguish you during your interview? Because your academics, they have been tested. Hello, can you guys, am I audible? Kindly confirm in the chat box, am I still audible? Okay, extracurriculars, yes, they are super important. Okay, internships, etc. Research paper, yeah, if you do manage to get a research paper published, then definitely it will help you, but it is quite difficult at your level to get a research paper published. So I won't suggest going and investing your time on research paper, because most of the time what actually happens is that in pre-med, during your pre-med life, what you are quite premature and you don't have enough idea of how to get your research paper published. Okay, or if you are actually in contact with great researchers, then of course it will be of great help to you. But if you can't actually do that, it doesn't matter. Okay, you can just go for other extracurriculars. Okay, now due to the COVID situation, the extracurriculars have been suspended. Yes, that's true. So in that case, what you can do is you could either go for online ECAs, online internships. For example, AKU had a virtual session or virtual program recently. Someone texted me, one of the students texted me that he recently registered for that program, so you guys can go for that. Or what you could do is you could just find out something online. Okay, and guys, now listen carefully, extracurriculars doesn't actually mean having something that would give you a certification. Okay, Nida Tahir, I will answer that question, where will you find the past papers. Okay, just hold on. Basically, what let me just finish off the ECA question. ECAs are very important. Okay, after you clear the test, and so basically you could go online. Okay, you could search out doing stuff online, or what you could do is you could just start doing something productive online. Okay, for example, I myself, I'm running this YouTube channel, right? But again, I won't suggest starting out your own YouTube channel at this moment, because it usually takes quite long to develop and everything else. So you could just do something online. Okay, staying
in the COVID situation. You could teach online, you could give tuitions, or you could guide your peers, your juniors, or back in your school, for instance, if you are from some certain school, what you could do is you could actually go back to the school and guide your peers or juniors regarding your level. Okay, जैसे फॉर इंस्टेंस आप अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं, ठीक है, या ए लेवल्स कर रहे हैं, तो आप अपने ओ लेवल्स के जूनियर्स को ये गाइडेंस दे सकते हैं कि आपने ये करना है, ठीक है. वो गाइडेंस के लिए आप क्या करेंगे, आप अपने स्कूल के साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं, ठीक है. तो स्कूल माइट गिव यू सम सॉर्ट ऑफ अ सर्टिफिकेशन दैट या दिस पर्सन has been helping out the school even after graduation. So something like that. Anything that's going to be productive will help you, okay? And anything that's other than studying or other than learning actually, okay? It can be teaching as well, okay? I myself am a teacher, right? So this actually helped me a lot during my interview. I did talk about my teaching skills and stuff. All right, now let's just move on to the other question. Sarah, I think I might not have answered your question fully because I don't know what sort of opportunities are available in this situation, in this COVID situation. But what you could do is you could just go on to Google and it will be better if you could find out something related to AKU itself, okay? Because it will show your interest in AKU from the beginning, from this level, okay? For example, their virtual program or other programs which they have. Now, sir, English speaking is essential to get admission in AKU. No, of course, Muhammad Sarbat. English speaking is not essential. You can give your interview even in Urdu, but it's preferred to answer the interviewer in the language in which he questions you. Okay, if he's asking you questions in English, you answer in English. If he asks you questions in Urdu, you answer in Urdu. If he asks bilingually, you answer bilingually. Okay, that will give you a strong edge over others, and that's actually the technique which my seniors during my time when I was preparing for the interview, they actually helped me out and they advised me, and I myself used the same trick. Okay, the interviewer, whatever language he was speaking in, I tried answering in that particular language. But it's okay if you answer in Urdu, it doesn't matter. Okay, it's still your interview will be counted. आगे चलते हैं. AKU test similar to SAT subject test like the Barron's SAT. Well, Barron's SAT can be used for practice material. The syllabus content of SAT 2, Barron's SAT is basically the SAT subject test, right? So yes, the syllabus content of subject test can be used for AKU. I myself, I gave the SAT subject test as well, okay, for practice, only for practice, but it's not a requirement, okay, for the local students. I'm not sure about the international students. I think international students can get in through SAT as well, but still, anyways, let me just finish off answering the previous questions. Is AKU test similar to SAT subject test like Barron's SAT? Barron's SAT, the syllabus content is the same, questioning style is somewhat different, okay, but the content is the same. So but guys, the ultimate content is the one which is given on SAT's website, okay, sorry, AKU's website, okay, the syllabus content which they have given. So it's better to stick with that. SAT 2, Barron's SAT can be used for practice, okay, it can be used for practice, but again, a better source is gonna be the past papers if you could get it from somewhere, okay. I'm gonna tell you the answer to where you can get it from, okay. I've already spoken about that in so many of my videos, but I'll still answer that over here as well. Now, from where to find the past papers? Okay, I'll just answer this. Nida Tahir now. Basically, past papers, original past papers can't be found anywhere. Okay, anywhere, not even on the internet. Okay, I myself, I tried a lot to find original past papers, but I didn't get any them from anywhere. Although the centers like Anis Hussain or other centers, which you guys might know, all the centers in Karachi who actually prepare you for the AKU's test. I prepared from Anis Hussain's DHA campus, phase 4. So they can give you recreated papers. Okay, so basically what are the recreated papers? Recreated papers are basically the papers which they recreate. Okay, they are not the original papers. So basically होता क्या है कि अगर students जाकर ना
एग्ज़ाम देकर आ जाते हैं, ठीक है, AKU का। तो फिर उसमें क्या होता है कि उनको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस याद करने होते हैं, ठीक है। द स्टूडेंट्स आर असाइंड अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। फॉर इंस्टेंस मुझे कहा था कि पहले के 10 क्वेश्चंस याद करके आ जाना, ठीक है। वो याद करने नहीं होते, वो याद हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है, याद रह जाते हैं। फिर हम जब वापस आए तो वी वर मेड टू री राइट दैम, रिक्रिएट दैम। So they have a whole collection of past papers, the recreated past papers. You could use them. That's the closest source to past papers. Otherwise, other than that, you might not get anywhere the original past papers from anywhere. अच्छा, जो past papers मेरे YouTube channel पर मौजूद हैं, I got them from Anis Hussain Center as well. Okay, basically उनके कोई links होंगे, उसके थ्रू आ गए। तो वो वाला पेपर हालांकि it still looks quite professional. Okay, it doesn't look quite recreated. Basically the one which is given on this YouTube channel, AKU पास पेपर की प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। From where to find the okay, आगे sir is English speaking required to अब इस I just answered this Mohammed sir Samad, English speaking is not a necessity. If you know it, that's good. Okay, is the AKU test similar to SAT subject test? ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। Will freelancing also be considered as an extracurricular activity? Well, freelancing is an extracurricular if you are yes, it is, of course it is a extracurricular, but of course it is something that you have to talk about, right? You can talk about it in the interview. So freelancing about which you can talk in the interview will give you an edge, okay? Then आगे an off-topic question, but what ECAs and sport activities are available in DMC when you are enrolled as their students? Okay, nice question. ECAs basically there are student-run NGOs, okay, multiple NGOs at DMC. You could be a part of them, and you could become. But wait, those opportunities are available for the MBBS students, not for the pre-meds. ओके, सो ECAs हैं DMC में, बट MBBS स्टूडेंट्स के लिए, प्री मेड्स के लिए आई डोंट थिंक दे हैव। अच्छा, प्री मेड्स के लिए उनके कुछ अपॉर्चुनिटीज़ निकल आती हैं लेकिन बहुत कम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव द पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, an NGO, which a big NGO, huge humongous NGO, okay, 500 प्लस स्टूडेंट्स हैं मेरे ख्याल से, पूरा DMC तकरीबन उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। इट्स फॉर थैलेसीमिया पेशेंट्स, ठीक है, ब्लड डोनेशन ड्राइव एंड चैरिटी ड्राइव एट्सेट्रा। That's a PWA, that's an extracurricular. So if you could get involved or get in touch with them, and if they have any opportunity for you guys, then it will be considered as an ECA and will actually help you out, okay. Sport activities, well, sport activities तो जो हैं वो हैं, मतलब जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है ऑन कैंपस वो तो हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी ओनली हैव द स्पोर्ट वीक, ओके। स्पोर्ट्स वीक होता है एक हफ्ते का तकरीबन, बस वही होता है पूरे साल में, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नो सच एक्टिविटीज़, ठीक है। जो फैसिलिटीज़ हैं यू कैन यूज़ देम एनी टाइम यू वांट। आगे चलते हैं। MDCAT preparation enough for AKU? Any special preparation is required? Best academy for MDCAT preparation? अच्छा, MDCAT preparation देखो, आप अगर NMDCAT की बात कर रहे हैं ना समझ, NMDCAT मतलब जो जिसमें आप अगर पंजाब बोर्ड या फेडरल बोर्ड फॉलो कर रहे हैं तो यस दैट्स इनफ, ठीक है। आप सिर्फ वो भी कंप्लीट कर लेंगे तो AKU का सिलेबस ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। बट स्पेशल प्रिपरेशन आपको क्या रिक्वायर्ड होगी? Special preparation that would be required is this one. Wait, the curriculum which they have given on their website. Now this is an example, biology. आप इसमें जो pointers cover हैं आप वो सारे cover कीजिएगा लाजमी, even if you are doing the book, the complete book, okay. मतलब पंजाब बोर्ड की बुक जब अगर आप कर रहे हैं पूरी। तो आगे चलते हैं। बेस्ट अकेडमी फॉर MDCAT प्रिपरेशन अब इसमें मैं क्या कहूँ आपको, अकेडमीज़ तो बहुत सारी हैं और सारी ही अच्छी हैं भाई, ठीक है। अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मैंने कहाँ से प्रिपेयर किया था, तो अनीस हुसैन से मैंने प्रिपेयर किया था, ठीक है। बट अकेडमीज़ आप किसी भी जगह चले जाएं, एक्चुअली अकेडमीज़ के इसलिए मैं मैं कोई ख़ास आंसर नहीं करूँगा क्योंकि NMDCAT इज़ मोस्टली सेल्फ स्टडी, ठीक है।
आपके अगर कॉन्सेप्ट्स अच्छे बन चुके हैं प्रीवियसली फर्स्ट या सेकेंड ईयर में, तो आपने बस एमडी कैट के लिए सेल्फ स्टडी करनी है। लेकिन मैंने DHA फेज़ 4 अनीस हुसैन से पढ़ा था, वहाँ के टीचर्स काफ़ी अच्छे थे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए अच्छे थे, फिज़िक्स के लिए अगर आप कहें, या फॉर इंस्टेंस केमिस्ट्री के लिए। बायोलॉजी में क्या कॉन्सेप्ट बहुत कम, हाँ बायोलॉजी में भी है कॉन्सेप्ट, जैसे जेनेटिक्स का पोर्शन हो गया, या बायो एनर्जेटिक्स का पोर्शन हो गया, या ह्यूमन बायोलॉजी हो गई, वो चीज़ें हैं, बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट वहाँ से बना सकते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी भी करें उसकी, तो सेल्फ स्टडी में आप ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएंगे, ठीक है। अकेडमी इज़ फॉर गाइडेंस, मेनली फॉर गाइडेंस, ठीक है। अकेडमी आपको पूरा 2 साल का कोर्स इतने चंद महीनों में नहीं करा सकते, ऑफ कोर्स इट्स नॉट पॉसिबल, राइट, ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। तो अकेडमी आपको हाँ ये करा सकती है कि आपको गाइडेंस दे सकती है कि आपने कौन कौन सी सोर्सेज यूज़ करनी है, क्या सिलेबस यूज़ करना है, पास पेपर की प्रैक्टिस करवा सकती है, ठीक है, ये चीज़ें करवा सकती हैं, ठीक है। तो आप यू कैन चूज़ एनी अकेडमी। आई माई सेल्फ वॉज एनरोल्ड इन अनीस हुसैन, ठीक है। बाकियों का मुझे पता नहीं, तो इसलिए आई वोंट कमेंट। आगे चलते हैं। दैट्स वेरी हेल्पफुल एंड येस आई डिड टेक पार्ट इन AKU's वर्चुअल चैलेंज। टुडे वाज द लास्ट डे ऑफ देयर वर्चुअल चैलेंज वीक। ओके, परफेक्ट, it will definitely help you out, Sarah. You are an international student, right? I think so. Okay, Samia Riaz. I've been looking for Anis Hussein's AKU past papers but cannot find. If you can provide somehow, that will be helpful. PDF or any other form. Well, Samia, basically the PDF I don't think if is available, but what you could do is, what I usually advise the students is just directly contact them and they'll give you a hard copy of the AKU's recreated past papers. Okay, I think they are a bit expensive, maybe because they are recreated and they've gathered them, और उस टाइप की सोर्स बहुत कम अवेलेबिलिटी है, तो इसलिए थोड़े से एक्सपेंसिव होंगे। तो just contact them directly and they'll give you the past papers. Well, usually the problem that most of the students what they do face is that Anis Hussain or the academy, they might not provide the past papers to the students who are not enrolled over there, right? तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि you could just ask them, क्योंकि जो नॉन enrolled स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए वो कंप्लीट कोर्स लेने को कहते हैं, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट कोर्स जो उनका होता है पूरे साल का, वो ख़रीदने के लिए कहते हैं। ऑल्दो तो फिर आप ये कर सकते हैं कि यू कुड जस्ट टेक्स्ट मी, आई रेफर यू गाइस टू देम, तो दे कैन, बट स्टिल यू नीड टू परचेज देम फ्रॉम देम, परचेज द पास पेपर्स डायरेक्टली फ्रॉम देम, ठीक है। आगे चलते हैं। हसन इसहाक, ओके, हसन इसहाक, okay, how are you? Walaikum assalam. Hope you're fine. Yes, I'm fine, definitely, thank you so much. Sir, any advice for an MD CAT of KPK? The new curriculum seems to have very mutual topics with A levels. Hassan Ishaq, this isn't a session for NMD CAT, but still I'll answer it. KPK के लिए तो NMD CAT जो है वो बेसिकली पूरे पाकिस्तान का एक ही होता है, तो KPK का कोई स्पेसिफिक नहीं है। एंड येस, यू हैव टू फॉलो द करिकुलम, एंड आप it's better to follow the Punjab board books or the federal board books this time, okay, क्योंकि usually last time क्या हुआ था कि सबसे ज़्यादा questions वहीं से आए थे, मतलब उनकी बुक से आए थे। सिंध बोर्ड से कुछ नहीं आया था, KPK बोर्ड से भी आए थे कुछ टॉपिक्स, लेकिन मतलब और if you wanted to be on the safe side, आप क्या कर सकते हैं, you could just refer to your provincial books, मतलब आप KPK के हैं तो प्रोविंशियल बुक्स को भी कवर करें और साथ में पंजाब बोर्ड को भी कवर करें, ठीक है। तो इट विल गिव यू अ सेफ कॉर्नर, ठीक है। एंड बाय द वे, अगर आप सिर्फ पंजाब बोर्ड को कवर कर लेते हैं तो KPK बोर्ड तो आपका ऑलमोस्ट 60-70% कवर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। एंड म्यूचुअल टॉपिक्स इन A लेवल्स बिल्कुल हैं, ठीक है। इट इज़ क्वाइट अ स्मार्ट करिकुलम, A लेवल्स के साथ काफ़ी मिलती जुलती चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप A लेवल्स का अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो समझो आपका आधा आधा हो गया है, बायोलॉजी आपका 40% हो गया है, बाकी चीज़ें आपने कवर करनी है। आगे चलते हैं। सर, कैन वी डू सेल्फ प्रेप फॉर MD CAT, एंड इफ यस, सो लाइक व्हाट पैटर्न शुड वी फॉलो, लाइक व्हाट स्टडी मटेरियल शुड वी यूज़, एंड व्हाट शुड बी आवर रूटीन? This is a question on which I think I should make a video, but I'll try making a video on this, okay. But self prep,
वेल यूजुअली इट इज़ एडवाइजेबल ओनली इफ़ योर कॉन्सेप्ट्स आर स्ट्रॉन्ग, ओके, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ही वीक हैं तो फिर इट्स बेटर टू जॉइन एन अकेडमी, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर जो याद करने वाली चीज़ें हैं यू कुड जस्ट डू द सेल्फ स्टडी, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कैन बी प्रोवाइडेड बाय द अकेडमी विच यू जॉइन। आगे चलते हैं। प्लीज़ टेल हाउ टू प्रिपेयर साइंस रीजनिंग एंड मैथ रीजनिंग। ओके, अ क्वेश्चन दैट आई वाज वेटिंग फॉर। मैथ रीजनिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इट्स द बेसिक मैथ दैट दे विल टेस्ट यू, ओके। अगर आप ए लेवल से हैं तो आपको ओ लेवल मैथ के बारे में आइडिया होगा, राइट। डी मैथ के बारे में तो डी मैथ के क्वेश्चंस होते हैं, फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस, रेशियोज एंड सिंपल स्टफ, ठीक है। एक सैम्पल पेपर मैंने अपने वेबसाइट इस यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ भी है, पूरा सॉल्व किया हुआ है 1 घंटे का, वो भी देख लीजिएगा, उससे हेल्प मिल जाएगी आपको और आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बाकी मैथ रीजनिंग के लिए यू कैन ऑल्सो रेफर टू SAT-1 मैथ, ठीक है। एंड बाय द वे मैथ रीजनिंग एक चीज़ मैं बता दूं, दिस इज़ अ स्पेशल एडवाइस फॉर द FSC स्टूडेंट्स कि देखो मैथ रीजनिंग में जो है ना ज़्यादातर FSC स्टूडेंट्स जो हैं वो रह जाते हैं। आई डोंट नो वाई, बट आई थिंक ये एक प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। तो इट्स बेटर टू गिव इफ़ यू आर सफिशेंटली प्रिपेयर्ड, इफ़ यू कंप्लीटेड योर सिलेबस, तो फिर आप मैथ रीजनिंग की काफ़ी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। मैथ रीजनिंग SAT-1, बाकी उसके अलावा खान अकेडमी इज़ अ वेरी गुड यूट्यूब चैनल फॉर SAT-1 मैथ, द बेसिक मैथ ओवर देयर, यू कुड जस्ट रेफर टू दैट। आगे चलते हैं। Is English coming this year in AKU's entrance exam? Well, according to the latest guidelines, no English is included. आगे चलते हैं। Video on how to apply for the admission of AKU. Well, I would be able to make a video on that only after the application process is open. Okay, so I'll try making that. आगे, what's the best way to prepare for MDCAT? The math reasoning on AKU is SAT-1 a good source for practice? Yes, definitely. SAT-1 is the best source for practice. And apart from that you could also use the O level math, okay, but just the basic math is tested, okay. आगे चलते हैं। बेस्ट वे फॉर प्रिपेयरिंग फॉर MDCAT वही है कि आप बस सिलेबस कंप्लीट कर लें, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, सिलेबस अच्छे से लर्न कर लें। एंड सेकेंड स्टेप, द मोर इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ डूइंग मैक्सिमम पास पेपर्स। MDCAT के तो पास पेपर्स आपके पास बहुत सारे अवेलेबल हैं और इजीली अवेलेबल हैं, तो उनको आप मल्टीपल कीजिएगा, बहुत ज़्यादा कीजिएगा, ठीक है। जब मैं अपने बारे में अगर बताऊं, व्हेन आई अप्लाइड फॉर द MDCAT तो हुआ क्या था कि आई वॉजंट एबल टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस। बाय द वे मैंने तकरीबन 75% या 80% कर लिया था, लेकिन मैं 100% नहीं कर पाया था, राइट। So what I did was that during the last month or last 2 months I just started off with the past papers practice, and कोई भी question में मसला होता था I would just text my teachers, they would reply. They were quite cooperative teachers, my teachers back there in the academy, okay, ठीक है, वो काफ़ी हेल्प करते थे मेरी, तो उससे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाती थी एंड उससे आपकी लर्निंग स्किल्स अच्छी हो जाती हैं। तो इट्स द पास्ट पेपर्स दैट आर मोर इम्पॉर्टेंट। आगे चलते हैं। If our extracurricular is a blog, then how to give proof of it to the interviewer? You could just simply open up the blog on your phone and you could just show it to the interviewer, and this is a big blog that I run, okay. But blog तो आप बना रहे हैं लेकिन productive होना चाहिए, ठीक है। मतलब basically it should be impacting someone's lives, it should be of a value to others, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की चीज़ हो। आप जो ब्लॉग रन कर रहे हैं ऑफ कोर्स वो अच्छा ही होगा, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। यू कुड जस्ट टॉक अबाउट दैट, यू शुड बी एबल टू टॉक। आपको जो भी चीज़ आप एक्स्ट्रा करिकुलर कर रहे हैं ना, देयर शुड बी अ पर्पस बिहाइंड इट। पर्पस क्या है? अच्छा, बाय द वे पर्पस का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि पर्पस इज़ टू सर्व द कंट्री, सर्व द नेशन। दिस इज़ अ जनरलाइज आंसर, यू शुड बी मोर स्पेसिफिक इन योर आंसर्स, ठीक है। what is the major purpose of doing what you are doing? Just for instance, I am teaching on this YouTube channel because I love teaching and I love helping out my peers and I love giving guidance to my juniors, ठीक है। This is just one example, guys. Please ये मत कहना इंटरव्यू में, ठीक है, जो मैंने कहा है। आप अपना कोई यूनिक, जो चीज़ आपके लिए यूनिक हो वो इंटरव्यू पर कहिएगा, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ अभी मैं कह रहा हूँ, there is a possibility that the interviewers might getting an idea of what I'm saying over here, ठीक है। they might also have a check on all of these things which are going on online,
तो फिर उनको आइडिया होगा कि किसी ने अगर कोई चीज़ ऑनलाइन उठाई है या किसी की अपनी ओरिजिनल चीज़ है। एंड ओरिजिनल वैसे ऑनलाइन भी अगर आप कोई चीज़ उठा लेंगे, इट डजंट मीन कि वो वैल्यू उसकी नहीं होगी, वैल्यू होगी लेकिन कम होगी एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल आइडिया दैट यू हैव। आगे चलते हैं। इफ़ आर एक्स्ट्रा करिकुलर इज़ अच्छा ठीक है, विच SAT Math 1 शुड वी बाय? Princeton on Barron's. Princeton is a very good book. I personally use Barron's. ठीक है, मैंने Barron's यूज़ की थी, लेकिन SAT Math 1 के लिए यूज़ नहीं की थी, मैंने सब्जेक्ट टेस्ट के लिए यूज़ की थी। Princeton के का ज़्यादा बड़ा नाम है, तो या यू कैन यूज़ दैट, बट अगेन I usually don't advise buying books for SAT Math 1 because there is a lot of material available online for free. ठीक है, so you could just go on to Khan Academy and you could just do the practice quizzes from there, or you could just go on to collegeboard.org. This is a website. I'll just type it down in the chat box, collegeboard.org for SAT 1 math practice. ठीक है, इस पे आप collegeboard.org पर जाकर आपको जो है ना फ्री प्रैक्टिस क्विजेस पूरे SAT के पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, बिकॉज कॉलेज बोर्ड ही SAT कंडक्ट करवाता है। ठीक है, तो यू कुड जस्ट गो एंड डू द प्रैक्टिस क्विजेस फ्रॉम देयर। अदरवाइज इफ यू डू वांट टू बाय द प्रिंसटन, यस यू कैन। आगे चलते हैं। यस, टीचर रिकमेंडेशन ऑफ कोर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। एंड टीचर रिकमेंडेशन यूजुअली आप जब अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे होते हैं तो उसके साथ ही एक रिकमेंडेशन लेटर या तो आप भिजवाते हैं, लेकिन अगर आपके पास यूजुअली स्कूल्स क्या करते हैं कि द स्कूल्स यूजुअली दे डोंट प्रोवाइड you with the recommendation letter directly, so the schools they usually send the letter directly to AKU through the courier service. मतलब मैं जिस स्कूल में था, निक्सर कॉलेज, तो उन्होंने तो यही किया था, they didn't give us the recommendation letter directly, they sent the recommendation letter anonymously without letting us know, ठीक है, to the AKU's department, admission department. आगे चलते हैं। Can you please elaborate on the cognitive level of understanding on AKU, as in what exactly would be the knowledge, understanding and application? Is knowledge limited to definitions? No, it isn't limited to definitions at all. There's a lot of concept based questioning and answering. Okay, so your concepts must be strong. Learning definition is necessary, it is a part of learning, okay, but still your concepts must be strong, especially for physics, especially for chemistry. Okay, biology, yeah, usually you do require a lot of definitions, but in genetics portion or bioenergetics or cell cycle or chromosome and DNA chapter, you would definitely need the concepts. The concept would be more important. The cognitive portion or the learning portion is actually more important for the kingdoms. ठीक है, आप अगर kingdoms कर रहे हैं जैसे kingdom Plantae, Animalia, तो उसमें लर्निंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एंड प्लांटी वैसे टेस्ट होता है काफ़ी फ्रीक्वेंटली, प्लांटी या एनिमेलिया। ठीक है, तो यू नीड टू डू दैट। आगे चलते हैं। My A levels is strong, but I'm nervous as the NMD CAT is inter-based, so I need some clarity. Don't worry about that, man. NMD CAT, usually the A level students, they do tend to get good scores on the NMD CAT because the NMD CAT is usually concept based, and even if it is not concept based, the stuff that is tested is quite basic, given that you have enough practice. Okay, if you haven't done enough past paper practice, then it will be a tough thing for you, but you do need a lot of past paper practice. And A levels आपके अगर strong है तो again that doesn't guarantee a full syllabus coverage. You definitely need to do a lot of the stuff that is not in the A level syllabus. You need to cover that as well, and it's better to just do the past paper practice and you'll get a grip of what you need to know. No, I don't have the Anis Hussein's past papers in PDF, sorry. I guess this completes all the questions. Any other question if you have? अगर questions नहीं हैं तो then I'll just give you a quick overview of the entire procedure of AKU and then we'll end the session.
Okay guys, so I'm waiting for 1 minute for any response. If you guys have no questions, please type no questions. Can we use NMDCAT past papers for practice of AKU? Well, you may use NMDCAT past papers because but as a practice material only, but the NMDCAT practice material won't prepare you for the science reasoning section, it won't prepare you for the math reasoning section. Okay, so science reasoning का तो वैसे आपको कहीं भी कुछ भी इतना खास नहीं मिलेगा. हाँ, मैथ रीजनिंग के लिए you need to then refer to SAT Math 1. साइंस रीजनिंग के लिए what you could do is you could just make your sciences strong. ठीक है, बेसिक साइंसेस अगर आपके स्ट्रॉन्ग होंगे तो देन योर साइंस रीजनिंग पार्ट इज गोना बी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, यहाँ पर मैं आई जस्ट गिव यू द सैम्पल पेपर. दिस इज़ द सैम्पल पेपर ऑफ AKU. ठीक है, ये सैम्पल AKU टेस्ट पेपर 2020 का है. दिस विल बी अपडेटेड टू 2021 मे बी. ओके, नाउ लेट्स 2 hours इज़ द अलॉटेड टाइम. साइंस एंड मैथ रीजनिंग NMDCAT का सिलेबस आप कंप्लीट करेंगे तो यू विल नीड टू देन use this Punjab board. Okay, if you are following Punjab board then yes, that's enough for AKU as well. लेकिन पास्ट पेपर्स अगर आप NMDCAT के सॉल्व कर रहे हैं तो प्रैक्टिस तो आपकी हो जाएगी. द कॉमन कॉन्सेप्ट्स that are tested, basically the syllabus that is common to both AKU and MDCAT, उसकी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी. yes, for that it's perfect. लेकिन जो चीज़ें नहीं हैं, for that you need to do additional practice. ठीक है, एडिशनल प्रैक्टिस आप या तो पास्ट पेपर्स अगर कहीं से मिल जाते हैं तो वहाँ से कर लें, या फिर अगर पास्ट पेपर्स नहीं मिल पाते तो फिर वो जो कन्वेंशनल बुक्स आ रही होती हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस कॉलेज बोर्ड नहीं, एक डोगर्स की कोई बुक आती है मेरे ख्याल से. ऑल्दो द क्वेश्चंस आर क्वाइट बेसिक ओवर देयर, बट यू कुड फॉलो दैट फॉर प्रैक्टिस. ठीक है, आई जस्ट क्विकली गो ओवर दिस सैम्पल पेपर ऑफ AKU टेस्ट पेपर 2020. ठीक है, साइंस और मैथ रीजनिंग भी है उसमें इंक्लूडेड. साइंसेस और मैथ का ही है. अच्छा, आगे चलते हैं. दीज आर द इंस्ट्रक्शंस. 15 MCQs एंड 20 MCQs. 15 MCQs केम बायो फिजिक्स के हैं, 20 MCQs रीजनिंग के हैं, साइंस और मैथ के. यू नीड टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग एल्स. ठीक है, ये एक सैम्पल पार्ट दिया हुआ है. ठीक है, बायोलॉजी के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, ये ऑफ कोर्स ये आपके फोटोसिंथेसिस से ही रिलेटेड क्वेश्चन है आपका. ठीक है, एंड A levels में भी इंक्लूडेड है और NMDCAT में भी इंक्लूडेड है. डायग्राम 1 shows a plant and human exposed to intense light. ठीक है, तो दिस इज L and this is a plant M. So which pigment protects the plants L and M from the effect of intense sunlight? तो intense sunlight से कौन सा पिगमेंट इनको प्रोटेक्ट करेगा? तो भाई स्किन पे कोई पिगमेंट होता है, स्किन में कोई पिगमेंट होता है, प्लांट्स के अंदर भी इंटेंस सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए. दे हैव गिवन यू एन आंसर D, कैरोटेनॉइड्स. राइट, carotenoids they actually absorb sunlight, so that's why they'll protect you. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे बायो के. ये दिस इज़ अ हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन, केमिस्ट्री का आ गया. ठीक है, pH = pK + log of salt over acid. यही आंसर है आपका. ठीक है, आगे चलते हैं. ये दूसरा क्वेश्चन है. तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन हैं. अब फिजिक्स की बात कर लेते हैं तो दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड. ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. ठीक है, आंसर्स भी दिए हुए हैं. और ये साइंस रीजनिंग की बात आ गई. अच्छा, साइंस रीजनिंग में यूजुअली क्या होता है कि दिस सॉर्ट ऑफ अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इज़ यूजुअली आस्क्ड. ठीक है, एक सिनेरियो आपको गिवन होता है. ठीक है, इन द फर्स्ट पैराग्राफ, एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट सिनेरियो आर आस्क्ड. ठीक है, दिस इज़ अब यही इसी पैराग्राफ से रिलेटेड ये आपको केस दे दिया है. ठीक है, इस केस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे कर दिए हैं कि इन फिगर 1 इफ़ O and Q आर बोथ हेल्ड फिक्स द पॉइंट Y कैन नॉट मूव, कैन मूव और एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ठीक है, तो ये आंसर B इसका इन्होंने मार्क किया हुआ है. ये पूरा पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये क्यों मार्क किया हुआ है. इस तरह से क्वेश्चन 8. तो ये बेसिकली आपके जो साइंसेस के पोर्शन है ना, उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और इस टाइप की जनरल नॉलेज टाइप या जनरल मैथमेटिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आ सकते हैं. ठीक है, ये देखो, ये अब फिजिक्स और मैथ को लिंक करके एक क्वेश्चन बनाया हुआ है इन्होंने. ठीक है, सर्कुलर मोशन का. तो ये फिजिक्स आ गई आपकी. अब ये वाला क्वेश्चन तो मैथ से लिंक लग रहा है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने एक बार जो मेरे अटेम्प्ट का पेपर था उसमें बेंजीन के रिएक्शंस भी पूछ लिए थे, और बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं साइंस रीजनिंग के. ठीक है, तो साइंस रीजनिंग में अच्छे मार्क्स लाना, अगर आपके साइंसेस स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपकी साइंस रीजनिंग ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. ठीक है, अच्छा, साइंस रीजनिंग का एक पूरा पेपर मैं सॉल्व करा चुका हूँ इसी यूट्यूब चैनल पर, तो यू कुड जस्ट रेफर टू दैट एज वेल.
मैं आपको वो प्लेलिस्ट एक बार बता देता हूँ, उसकी लिंक भी पोस्ट कर देता हूँ, एक सेकेंड। ओके, दिस इज़ द प्लेलिस्ट, ठीक है। इसमें आपके पास जो AKU की प्लेलिस्ट है, अच्छा बाय द वे मैं अपने चैनल पे काफ़ी चीज़ें डाल रहा होता हूँ, ठीक है। MD कैट की, MBBS की, A लेवल्स की स्पेशली आजकल पूरा कोर्स चल रहा है। तो ये AKU पास पेपर्स की जो प्लेलिस्ट है, दिस कंटेन्स ऑल द पास पेपर्स दैट आई हैव सॉल्व्ड, एंड ये वाले पेपर्स जो है ये काफ़ी क्लोज है, ठीक है, ओरिजिनल पेपर से काफ़ी मिलते जुलते हैं। और ये वाला जो MD कैट की प्लेलिस्ट है, दिस ऑल्सो कंटेन्स सर्टेन स्टफ फॉर AKU। अच्छा, वेयर इज़ दैट, एक सेकेंड, आई विल जस्ट पोस्ट दिस लिंक ओवर हियर। एंड आगे चलते हैं, कोई क्वेश्चन आ गया है, कैन वी यूज़ एन ओके, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर enrolled at DMC from NICSER this year? If you know any, because I'm also from NICSER, that's why I'm asking. All right, so you are from the same college as me. Yeah, I myself am from NICSER. This year कितने स्टूडेंट्स आए थे मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अच्छे खासे आए थे। मेरे ख्याल से कुछ मेरे टाइम में जब मैं अपने बैच में था तो तकरीबन 16 स्टूडेंट्स आए थे, ओनली फ्रॉम NICSER, 16 स्टूडेंट्स, 16, ठीक है। AKU test will be more conceptual than NMD CAT. Well, cannot comment on that because NMD CAT का जो पेपर होता है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल पेपर होता है। कभी कभार NMD CAT का पेपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल आ जाता है और कभी कभार बिल्कुल रट्टा बेस्ड आ जाता है। तो अगर वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होगा, AKU का टेस्ट जो होता है वो यूजुअली बस बीच में मॉडरेट लेवल पे होता है, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं क्वेश्चंस और याद करने वाली क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। ओके, 55 मिनट्स काफ़ी हो गए हैं आई गेस। आई जस्ट गिव यू अ क्विक ओवरव्यू नाउ। आई गेस क्वेश्चंस आप सब के हो चुके हैं कंप्लीट। अच्छा, सिर्फ 11 व्यूअर्स हैं हमारे पास, चलो कोई बात नहीं। अच्छा गाइज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू शेयर दिस चैनल विथ योर पीयर्स, जूनियर्स एट्सेट्रा। You've done AP courses. AP courses are somewhat similar to A levels as well. So I would still suggest going for the Punjab board course, ठीक है। क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए तो आई थिंक SAT था, लेकिन अब SAT नहीं है। तो अगर इफ़ यू आर अप्लाइंग एज अ लोकल then you'll need to cover the Punjab board syllabus. Yes, AKU has 100 seats for MBBS each year. टेस्ट 300 स्टूडेंट्स क्लियर करते हैं। आउट ऑफ द 300, the 100 are shortlisted based on their interview experience. और कोई क्वेश्चन? You guys have 4 more minutes to ask questions, then I'll just give you a quick overview of the test, interview, and then we'll end the session. 4 मिनट्स में अगर आपके कोई और क्वेश्चन हैं तो आप पूछ लें प्लीज़। गाइज, एक हम्बल रिक्वेस्ट ये मैं कर रहा था कि प्लीज़ डू शेयर दिस चैनल विथ योर पीयर्स, जूनियर्स एंड एवरीवन who are preparing for the AKU's interview. The reason why I made the AKU section of this channel is because when I myself was preparing for AKU, I had quite limited guidance available. मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स, ऑलमोस्ट बहुत कम ही, कोई चंद ही यूट्यूबर्स हैं जो AKU के बारे में बनाते हैं वीडियोस, ठीक है। एंड यूट्यूब के बारे में तो खैर मुझे उस वक्त इतना कुछ खास आइडिया भी नहीं था। प्लस सीनियर्स हैं जो कि हेल्प करते थे, लेकिन काफ़ी बाद में हेल्प की उन्होंने, लेकिन उनकी हेल्प के बगैर तो ऑफ कोर्स नहीं हो पाता था मेरा। तो दैट्स व्हाई आई मेड दिस चैनल। द चैनल तो खैर स्पेसिफिकली AKU के लिए नहीं है, इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। ये जो AKU सेक्शन है वो जूनियर्स के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करने का मेन मकसद है मेरा, ठीक है। तो आप प्लीज़ अपने जूनियर्स या पीयर्स के साथ भी ये चैनल शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। स्पेशली वो वाले जूनियर्स जो कि ग्रेड 9 या ग्रेड 10 में हैं, ठीक है। ग्रेड 9 और ग्रेड 10 में अगर हैं तो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदा क्यों होगा, क्योंकि द एक्स्ट्रा करिकुलर्स दैट यू रिक्वायर टू क्लियर द interview, you need to prepare or create that sort of profile
फ्रॉम दैट टाइम, ठीक है। मैंने भी काफ़ी लेट स्टार्ट की थी, मतलब मैं जब एफएससी मतलब ए लेवल्स में जब आ गया था तो तब मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर्स ठीक से स्टार्ट किए थे। लेकिन अगर आप ग्रेड 10 में हैं या ओ लेवल्स में हैं और फिर आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स वहीं से हेल्प कर रहे हैं, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली, तो इट विल एक्चुअली हेल्प यू आउट अ लॉट, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, 241 seats are available for MBBS in Dow for Karachi. Merit and self finance category, merit की basically 241 है और self finance की around 100 seats है. Can you also show the website from where we have to apply? It's aku.edu, ठीक है, इसी वेबसाइट से आपने अप्लाई करना है, ठीक है. I would really suggest, really recommend all of you to join this group which I created specifically for the guidance of AKU, ठीक है. तो कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी जो जिसके बारे में मुझे पता होगा, वेरीफाइड वैलिडेटेड अपडेट, तो मैं वो यहाँ पर पोस्ट करूँगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू गाइज कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस रिगार्डिंग AKU. कोई क्वेरीज पूछनी हो वो भी आप कर सकते हैं. आपके अगर कोई मतलब कोर्स कंटेंट रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो, मतलब कोई MCQ समझ ना आ रहा हो, वो भी आप यहाँ पोस्ट कर सकते हैं एंड एनीवन कैन आंसर, ठीक है. यहाँ पर मैंने वो वेबसाइट की लिंक दे दी है जहाँ से आप अप्लाई करेंगे. यहाँ पर ये दिस इज़ अ लिंक aku.edu/admissions, ठीक है. इस पर AKU का एप्लीकेशन पोर्टल आ जाता है एंड एप्लीकेशन इज़न्ट ओपन येट, ठीक है. वो ओपन होगी कब, 5 अप्रैल को ओपन होगी एप्लीकेशन, ठीक है, और 6 जुलाई तक चलेगी. You just need to keep that in mind. उस वक्त then you'll have to open that up. Thank you Jannat for the kind comment. यार देखो, कॉग्निटिव लेवल का ये मतलब है कि आपने लर्निंग अच्छी होनी चाहिए, बस सिंपल लर्निंग कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए यार. इट्स जस्ट डोंट गेट टू वरीड अबाउट द कॉग्निटिव लेवल, ठीक है. कॉग्निशन यूजुअली रेफर्स टू लर्निंग, ठीक है, लर्निंग. तो लर्निंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, बस उस कॉन्सेप्ट आपका अगर अच्छा हो, स्ट्रॉन्ग हो, पास पेपर के थ्रू या SAT प्रैक्टिस मटेरियल के थ्रू, दैट्स इनफ. What's the fee at DMC per year for students in merit category? It's around 60,000 per year, 60,000 rupees Pakistani for local students. What time make you call for interview if you have cleared the test? Usually after the NMDCAT result has been announced, ठीक है. NMDCAT, sorry, result नहीं, after the NMDCAT has been cleared. NMDCAT का टेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं एंड दैट्स यूजुअली अराउंड 1 to NMDCAT के टेस्ट के 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद आपको बुलाते हैं, या फिर आपको NMDCAT से पहले भी बुला सकते हैं, ठीक है, डिपेंड्स. 1-2 हफ्ते का टाइम होता है एटलीस्ट, मिनिमम, ज़्यादा भी हो सकता है. Okay, Isha, I would have loved to send the link of Anis Hussein's past papers, but I don't have them. ठीक है, PDF नहीं है मेरे पास. आप the only way to get them is just purchase them from them directly. Purchase the past papers directly from them. आगे क्या है? Please crop the screen to the important portion. Okay, sure, I'll try. सेल्फ फाइनेंस के अराउंड 5 लाख 5 लाख है.
So basically let's just do a quick overview and then we'll end the session. ठीक है? Alright guys, so for the AKU's interview, okay, chalo, I'll just open up the PowerPoint presentation for that. 1 second. Alright, I hope you guys can see my PowerPoint presentation. You guys see the PowerPoint presentation? Alright, so now let's just do a quick overview. No, you don't need to maintain the merit. Don't worry. You just don't need to get fail. बस fail नहीं होना आपने, बाकी don't need to maintain it. The maintain का मतलब ये है कि आप don't need to get a 4 on 4 GPA, but like अच्छी बस GPA आपकी हो तो सही है. Alright, so now let's just quickly do a quick overview of AKU. Right guys, so basically AKU's entrance exam is the first step. Okay, you have to prepare for AKU's MBBS admissions through the first step is AKU's entrance exam. Okay, how to prepare for the AKU's entrance exam? You need to follow their curriculum, which I mentioned earlier. The curriculum is available where? It's available on their website. For easy access, just join my Facebook group, and I've given the link to that website directly. Otherwise, you could just go on to the website at aku.edu and /syllabus and you'll get it. After curriculum, okay, the curriculum has to be prepared from Punjab board books or federal board books. Punjab or federal board books. Okay, and the books have to be compared against the curriculum as well. Okay, so both the stuff have to be taken simultaneously. Apart from that, you'll need practice material. The practice material for the sciences, the best one if it are the past papers. Okay, the closest past papers are available on my website, on my YouTube channel. Okay, the link to which I've already posted, but you could get the recreated past papers as well. I use Anisosense, but you could use any. Okay, given that they are past papers. And guys, एक बात आप याद रखिएगा, ये past papers एंट्रेंस एग्ज़ाम के पास पेपर्स हों, ठीक है, एफएससी के ना हो. कुछ लोग क्या करते हैं कि वो एकेयू बोर्ड भी होता है, एकेयू एफएससी का बोर्ड है, राइट. एकेयू एफएससी के पास पेपर्स इजीली अवेलेबल होते हैं, उसके पास पेपर्स जो है वो शेयर कर लेते हैं और कहते हैं कि ये पास पेपर जो है ये एकेयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम के पास पेपर्स हैं. तो नहीं, ठीक है, एकेयू एफएससी के पास पेपर्स प्रैक्टिस के लिए यूज़ हो सकते हैं, लेकिन दे आर नॉट द एक्चुअल पास पेपर्स एज वेल. रिक्रिएटेड पास पेपर्स हैव टू बी यूज्ड, ठीक है. फिर इसके बाद आप मैथ रीजनिंग और साइंस रीजनिंग की बात कर लें. तो मैथ रीजनिंग you have to use SAT math, SAT 1, basic math only, okay, basics, or you could just use O level math, B math, which is available anywhere. You could just find out the past papers of O level math. Science reasoning,
The first step, okay, I'll just take a new page. The first thing to do is, for science reasoning, is prepare the sciences very well. And by the way, the reasoning, it's called reasoning because it mainly tests the concepts. Okay, so if your concepts are strong, this part literally is going to be very easy for you. Okay, but if the concepts are weak, then of course it's going to be a challenge for you. Okay, so sciences concepts have to be strengthened. Usually a scenario is given, and scenario based 2 to 3 questions are asked from that particular scenario. For instance, I'll just give you one example. A question that came in my attempt. Okay, you guys recognize this structure? It's methylbenzene, right? You may also call it toluene. This is phenol. This is chlorobenzene. Okay. Now, these are the structures that were already given. And we were asked which of the above structures will react the slowest with electrophiles. ठीक है, किसी ने अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो उसको आइडिया होगा कि देयर आर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स. Methyl group and OH group is an activating group. Both of them are activating groups, whereas halogens, they are deactivating groups, right? So deactivating groups would reduce the activity or reactivity of the benzene ring. So C आंसर होगा उस केस में. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो एक स्ट्रक्चर से होगा कि methylbenzene is a compound which is found which has a derivative known as TNT. Give the structure. Which of the following represents the correct structure of TNT? TNT पता है क्या होता है? TNT, trinitrotoluene. It is a derivative of methylbenzene. ठीक है, this is TNT जिसमें नाइट्रो ग्रुप्स 3 जगहों पे लगे हुए होते हैं. ठीक है, 2,4,6 trinitrotoluene. This is an explosive. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर फिर आज से पूछ सकते हैं अगले में. इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे आपके साइंस रीजनिंग में बेसिक. तो इसके लिए आप जस्ट साइंसेस के कॉन्सेप्ट्स अगर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, साइंस रीजनिंग हो जाएगा, उसकी टेंशन ना लें आप. ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपने पास पेपर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिएगा. अगर पास पेपर्स आपको इन केस नहीं मिलते कहीं से भी तो फिर सिंपल है, डोंट वरी अबाउट दैट गाइस. सिर्फ पास पेपर्स तो पास पेपर्स के अलावा भी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस आप NMD कैट के पेपर्स फिर सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, NMD कैट के पेपर सॉल्व करने से क्या होगा कि आपके पास डबल प्रिपरेशन हो जाएगी. NMD कैट की भी प्रिपरेशन हो जाएगी और AKU की भी हो जाएगी. इसके अलावा आप फिर AKU के जो FSC के पेपर्स हैं फिर आप उन पे जा सकते हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं. बट रिक्रिएटेड, अच्छा इसके अलावा आप बैरन्स का जो SAT मटेरियल होता है या प्रिंसटन का सब्जेक्ट टेस्ट का, उसमें भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, यू कैन यूज़ दैट. इसके अलावा डोगर्स की एक बुक आती है पास पेपर्स AKU की प्रैक्टिस के लिए, you could use that, but Doggers is quite an easy book, a very basic book. Usually questions Doggers type के होते नहीं हैं, लेकिन प्रैक्टिस मटेरियल है तो यू कैन यूज़ दैट. ठीक है, मैंने Doggers भी ख़रीद ली थी, बैरन्स भी ख़रीद ली थी, पास पेपर्स भी ले लिए थे. ठीक है, बट सबसे ज़्यादा हेल्प मुझे पास पेपर से मिली थी. ठीक है, बैरन से हाँ समवॉट हेल्प मिल गई थी, Doggers से तो इतनी हेल्प बिल्कुल नहीं मिली थी. ठीक है, let's just check out what questions you guys have next. This was all about AKU. If questions nahi hai, then we'll end it. Okay, 1 second. No, देसी गेमर नहीं, you don't need to, मतलब अगर आपने एक पर्टिकुलर GPA से कम GPA ले आई तो आपका मेरिट आपसे छीनेंगे नहीं. ठीक है, टेंशन ना लें, यू विल स्टे ऑन मेरिट. अब जस्ट कॉल देम, दे विल गिव यू. अच्छा, आप एक काम कर सकते हैं, इफ़ यू आर फ्रॉम कराची यू कुड जस्ट गो टू देयर सेंटर डायरेक्टली. ईशा ताहिर, you could go to Anis Hussain Center directly and buy it from them over there, but make sure to buy the past papers, okay, not the practice books which they sell.
because the past papers are important. And अगर आप कराची से बाहर हैं तो then you could just simply call them and ask for the past papers. And अगर फिर भी मसला होता है तो you could just contact me on Facebook and then I'll just refer you to them and then they'll give you the papers. Facebook या YouTube पे कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा. I'll be a bit quicker in responding. ठीक है? So that's it guys. एक घंटा 14 मिनट की मीटिंग हो गई है, काफ़ी लंबी मीटिंग हो गई. Any other questions? कोई क्वेश्चन अगर नहीं आया अगले 1 मिनट में तो then I'll end it. Okay? Alright then. Thank you guys. Take care. See you. Allah Hafiz.